इस वीडियो में हम गेट 2025 का क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन फिर से पूछा गया था फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से। सो क्वेश्चन बोल रहा है लेट एफ साजर r2 आर गिवन बाय दिस फंक्शन एंड जी साजर r2 आर गिवन बाय दिस फंक्शन। देन फॉर एनी कॉम्पैक्ट सबसेट के एफ इनवर्स के इज कॉम्पैक्ट एंड फॉर एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट के जी इनवर्स के इज कॉम्पैक्ट। दीस आर दी टू स्टेटमेंट्स। सो हमें चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ as if inverse k for any compact subset k of r, for any compact subset k of r, f inverse k is a subset of r2। ठीक है ना, क्योंकि इस फंक्शन का डोमेन r2 है। नाउ दिस इज कॉम्पैक्ट in r2 if and only if closed and bounded। ठीक है ना, बाय हाइनेबोडल थ्योरम हम बोल सकते हैं f इनवर्स k is compact if and only closed and bounded। now k is compact in r2, तो बाय k now k is compact in r, बाय हाइनेबोडल थ्योरम हम बोल सकते हैं k is closed। ठीक है ना, as f is continuous, as any polynomial function is always continuous, so इससे हम बोल सकते हैं f inverse k is closed। on the same way, if k is compact in r2 as g is also a polynomial function which is also a continuous function, so हम बोल सकते हैं g inverse k is also closed in r2। mind it, in r2 k is a closed compact set in r, closed set in r, but f inverse k and g inverse k are closed sets in r2। now f inverse k और g inverse k फिर compact होगा if and only these sets are bounded। अगर f inverse k bounded होगा और g inverse k bounded होगा तभी f inverse k और k inverse k compact होगा। now what I am considering, observe the function f very carefully। f is f of xy को हम लिख सकते हैं, सॉरी f of x1 x2 दिया हुआ है, सो x1 x2 लिखते हैं। f of x1 x2 दिया हुआ है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2। ठीक है ना, सो इसे हम लिख सकते हैं x1 minus x2 whole square। so now as any finite set is always compact in any topological space, now R में I am taking the finite subset 0। this is a finite set, so compact in R। ठीक है ना, finite subset compact in R। now f inverse 0, f inverse singleton 0, this is equal to all such x1 x2 belongs to R2 such that f of x1 x2 is equal to 0। this is the definition of the set, so हम लिख सकते हैं इससे all such x1 x2 belongs to R2 such that x1 minus x2 whole square, this is equal to 0। so which is equal to all such x1 x2 belongs to R2 such that x1 equals to x2। ठीक है ना, सो हम एक बार अगर R2 का पिक्टोरियली इसे सोचेंगे तो हम लिख सकते हैं दिस इज x1 x1 डैश x2 x2 dash। so x1 equal to x2 is this line, x1 equals to x2। so this line is never bounded क्योंकि इस लाइन दोनों साइड में एक्सटेंड हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, so this is not a compact set। so ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो था कि फॉर एनी कॉम्पैक्ट सबसेट के एफ इनवर्स के कॉम्पैक्ट होगा, वो तो करेक्ट नहीं है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ देखते हैं व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट 2। सो स्टेटमेंट 2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो जी फंक्शन था, जी फंक्शन कुछ ऐसा था जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ x1 x2 इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस x1 x2।
सो मैं क्या कर रहा हूँ, एफ इनवर्स लेट आई एम टेकिंग लेट के, क्योंकि के इज अ कॉम्प्लेक्स सबसेट इन आर, आर का कोई भी कॉम्प्लेक्स सबसेट क्लोज्ड और बाउंडेड होगा, तो मैं के को विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ऐसे क्लोज इंटरवल कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है ना। k is equal to ab, so now g inverse k, this is equal to all such x1 x2 such that g of x1 x2 belongs to k, ठीक है ना। तो इससे हम बोल सकते हैं कि all such x1 x2 such that 2x1 square plus 2x2 square minus x1 x2 belongs to closed interval ab, so which is equal to all such x1 x2 such that a less equals to 2x1 square plus 2x2 square minus x1 x2 less equals to b, ठीक है ना। now what I am doing, मैं x1 x2 का पोलर कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, x1 इक्वल्स टू r cos थीटा, x2 इक्वल टू r sin थीटा। सो हम बोल सकते हैं इससे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, ठीक है। नाउ 2 टाइम्स ऑफ x1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 x2, इसे हम लिख सकते हैं 2r स्क्वायर माइनस 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 r square sin theta cos theta, sin theta cos theta I can write r square by 2 sin 2 theta, so that would be, if I take r square common, that would be 2 minus 1 by 2 sin 2 theta. Now as this function is always bounded, this would be bounded if r square is bounded, ठीक है ना। now as gxy lying between these two numbers, what I can write now, we can write, also note that minus 1 less or equals to sin 2 theta less or equals to 1, सो इससे अगर हम माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो माइनस हाफ लेस और इक्वल्स टू माइनस हाफ साइन 2 थीटा लेस और इक्वल्स टू हाफ, और दोनों साइड में हम 2 ऐड कर देंगे, सो 2 माइनस हाफ लेस और इक्वल्स टू 2 माइनस 1 by 2 साइन 2 थीटा लेस और इक्वल्स टू 2 प्लस 1 by 2, सो इससे हम बोल सकते हैं कि 3 by 2 less or equals to 2 minus 1 by 2 sin 2 theta less or equals to 5 by 2, ठीक है ना। सो दोनों साइड में अगर हम r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 3 by 2 r स्क्वायर less or equals to r स्क्वायर 2 minus 1 by 2 sin 2 theta less or equals to 5 by 2 r square. Now let's see our g का कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन था, सो दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर 2 minus 1 by 2 sin 2 theta less or equals to b. Now this term is very much lesser than 3 by 2 r square, so हम लिख सकते हैं 3 by 2 r square is less or equals to b, तो इससे हम लिख सकते हैं r square is lesser than 2b by 3. Now r square का वैल्यू क्या था, x square plus y square, so x square plus y square is lesser than 3b 2b by 3. Now as b is a constant real number, so this is all the points lying inside the circle of radius 2b by 3. So hence I can say that g inverse k is always a compact set. So statement 2 is correct. So statement 1 is false and statement 2 is correct. So which is our option B. So option B our correct option.